Welcome back, guys. In today's video we will be studying the factors affecting oxyhemoglobin curve. So in the previous video, guys, we have talked about the oxyhemoglobin dissociation curve. So I hope you guys have watched that video, because if you want to understand that video, please go and watch that video first, as it is very important. So please watch that video and come back to this one. This will give you a clear idea about what we are talking about, what factors are effectively participating in moving that curve right or left. So I hope you guys watch that video. So in this video we will be talking about the major factors which are responsible for the moving of the curve in the left and the right direction. That is the oxyhemoglobin curve, which is present in sigmoid in shape and it is present in the middle. It can be shifted either left or right depending upon certain factors. So the factors that we will be talking about are temperature, acidity, bisphosphoglycerate, and fetal hemoglobin. Right. So in this video, we are talking about out of the four factors, we're talking about the two factors, that is the temperature and the acidity. In temperature, what is happening? For example, if in the high temperature, जब गर्मियाँ होती हैं, it is very summery. In those days, what happens, जब गर्मियों में हम कोई physical activity perform करते हैं, if you're performing any kind of physical activity, in that physical activity, what is happening? If you are running too fast, so muscle work increase होता है. अगर muscle work increase होता है, तो oxygen का जो usage होता है, that is also happening at a very fast rate. ठीक है, ऑक्सीजन का यूजेज फास्ट रेट पे होता है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है. अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो उससे हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो दिस ऑल इज हैपनिंग, बट इन दिस केस आपकी बॉडी में से जितना वाटर है, जितना ऑक्सीजन है, इट इज़ ऑल बीइंग डिप्लीटेड एट अ वेरी फास्ट रेट. सो इन ऑर्डर टू प्रोक्योर इट बैक, व्हाट योर बॉडी डज, जितना भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंबाइंड होता है ऑक्सीजन से, जो इस कर्व में हमने दिखाया है इन द मिडल, इट इज़ नॉर्मली व्हेन यू आर नॉट सिटिंग नॉर्मली या स्टैंडिंग नॉर्मली, इट इज़ इन दिस पोजीशन. बट एज सून एज यू स्टार्ट रनिंग एट हाई टेम्परेचर, गर्मियों में बहुत गर्मी में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में आपकी बॉडी का डिमांड जो होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आप स्केलेटल एक्टिविटी भी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो. अगर आप वो जो एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो तो मसल का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. द मसल्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज़ इंक्रीजिंग. दैट मीन्स the oxygen molecules are separated from the hemoglobin molecules and they are released in order to go and do their task. So that is why here, if the oxygen molecule and the hemoglobin molecule, they combine together 37 degrees Celsius, लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर पे आते हैं 43 पे, तो क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कंबाइंड होता है उसमें से ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को अलग कर देता है. दैट इज दे आर डिसोसिएटेड, एंड ड्यू टू द डिसोसिएशन द कर्व which is in the middle shifts towards the left. That means shifts towards the right. That means the right side curve shifting is referring to the low affinity of binding oxygen and hemoglobin. Obviously अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी. अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और बॉडी के पास जितना भी ऑक्सीजन था वो ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, तो क्या करेगी बॉडी, जितना भी ऑक्सीजन से कंबाइंड हीमोग्लोबिन था वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से उसको अलग करके आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट पूरी करेगा. तो जितना भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हमारा कंबाइन हुआ पड़ा था वो अलग होगा, एंड देन द कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, दैट इज इन द राइट साइड. दिस इज द राइट साइड एंड द अदर वन इज द लेफ्ट साइड. So this is happening, and now if the curve is in the right side, that means it has low affinity. That is बहुत कम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो हीमोग्लोबिन से बाउंड हैं. This is happening at high temperature. Now if we are talking about the low temperature, in that what is happening, हमारे को ज़्यादा, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होता, इट्स ऑल ओके नॉर्मल. तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन इतनी डिमांड नहीं होती है, तो जितना भी ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करने की कोशिश करता है हीमोग्लोबिन से. अगर ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, दैट मीन्स इट शुड हैव हाई एफिनिटी. अगर हाई एफिनिटी है तो मतलब द कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एट द लो टेम्परेचर, क्योंकि उसमें हमारी skeletal muscle का जो metabolism, that is also very less. So this is happening in case of the temperature graph. Next, if we move to the acidity graph, in this also we have shown that this is the normal, that is 7.4, and अगर curve shift करता है right side को तो नीचे की तरफ, that is 7.2, and if it shifts towards this 7.6, this is alkaline and this is acidic, right? Yeah.
So now what is happening, अगर skeletal muscle की activity increase होती है, if the muscle of the skeletal activities, if the skeletal muscle activity is increasing, now the work is also increasing, the work fast at an efficient rate. That means lactic acid and carbonic acid production is increasing, and due to that the pH is also decreasing, and the pH will decrease. That means the curve will shift towards the right side. pH कम हो गया तो curve कहाँ जाएगा? Right side पे. That means if the oxygen demand is increasing, as it shifts right को शिफ्ट करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है ताकि वो इजीली अपना राइट साइड में शिफ्ट हो सके, और उसके बाद राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है. और ऑब्वियसली इफ दिस इज गोइंग ऑन इन द एसिडिक मीडियम, इन द अल्कलाइन मीडियम व्हाट विल हैपन? इन द अल्कलाइन मीडियम ऑब्वियसली more and more oxygen will try and bind to the hemoglobin, and that is why the curve will shift in the upper direction. That is, the pH will be 7.6 instead of being 7.4 or 7.2. 7.2 किस केस में होगा? ये होगा एसिडिटी, ज़्यादा एसिडिक है. ज़्यादा एसिडिटी कब होगी? जब बॉडी में लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. अगर कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो रहे हैं तो वो किस केस में होंगे? जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा है. ठीक है, तो इस केस में हमने ये बोला कि जो pH होता है जैसे ही वो डिक्रीज करता है तो जो हमारा कर्व होता है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जो pH हो जाएगा 7.2 हो जाएगा. Right guys, so this is a very clear idea about temperature and acidity and how these two factors are affecting the oxyhemoglobin curve. I hope this video is clear. If you're not, just pause the videos, watch this thing again so that you get a clear idea. I hope you guys liked the video. Click my subscribe button beta, and don't forget to like. Thank you and have a nice day.